Hi guys. So today we have another chartered accountant who has got placed in campus. Okay, 2023. He got placed in PSU IOCL, which is a great company to be in. So he will be sharing his experiences to us. Yes, Rahul. Hello, sir, and hello, everyone. Thank, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself and just to share my journey. So I just wanted to let you all that I just came to know about Ghanshyam through one of my friends. He suggested me to his mentorship program. So I enrolled his mentorship program, and it was just a tremendous program for me as it helped me to crack my IOCL interview. During this mentorship program, sir was very helpful to me. He showed the path how to clear me my HR round, how to crack technical round. I He took one-to-one mock classes session, mock interviews as well, and he made a group of so many students was there. So in case we are having the doubt, it was easy for us to get it clear. Even sir was so engaged in his mentorship program. Whenever I messaged him, he was ready to just answer me, clear my doubts every time. Uh, I remember the one incident it was around 2 a.m. at night. I messaged him, I was having some doubts. So he was there just to help me. So I was shocked that at late night also he was ready to clear my doubts as well. We clear it till He 4 did, p.m. also. Okay. yeah. We have to clear till 4 p.m. also. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. And one of his USPs of sir is that his study material is so well uh, designed or well maintained that whatever they asked in my interview, it was all easily available in his study material. So when I was giving my interview, so I knew that it was there in his study material. So it helped me a lot. I already know those answers. So just it went fine, and I was really shocked when I got selected because I was not hoping that, but because of sir only, it was so easy for me to clear that. I wanted to So know, like, you also had attempts. Okay, now many people have multiple attempts. तो what do you have to say to yeah, them? Any, and you might also feel that आपका इतना attempts हो गया तो job अच्छा लगे, एक होता है, like everybody has that dream key we get into a good I'll not get into your attempts, but it's good attempts. So how you feel that many people have good amount of attempts, like 5, 6, 7, 8 attempts also, and they feel like they will get job or not. So what is your take on that? What was your initial feeling when you cleared CA कि job मिलना इतना easy रहेगा? कितना सोचे थे that okay, sir. also. Hmm. I'm coming on that. Mhm. Having talking about that, I will let you know about my attempt. I am multiple attempts here, and when I filled my CA campus placement form, so I was not hoping that even one company will shortlist me. But when the shortlisting came out, so I was shortlisted by two companies. One was Impact and one was IOCL. But in my subconscious mind, there one thing was going on that will I be able to clear it that because I was having so many attempts. But because of you only, sir, I cleared my IOCL. So at the end of the day, I would like to say that attempt doesn't matter if you are well prepared, you are having some good mentor or someone is there to guide you. So it become easy for a multiple attempt CA to get the job. And we all know that getting a job in a PSC is not a easy task or is not a cakewalk. So I would like to say that if you are having a good mentor or if you are having a good study material, someone is there to guide you through your interview journey. So it's become just easy for you. It becomes easy. Yes, Right. And attempts is not a barrier if you have good amount of knowledge. I always say this also, that yes, if you sir. have good amount of knowledge, you don't have to worry on attempts. And even if Yeah, I've seen, okay, many first, second attempt also, they're not getting job till now. Out of 13,000 chartered accountants, I feel around 4 to 5,000 have got a good amount of job, like more than 8 lakh rupees salary. And still many are not getting job. And it's not the case that they have less attempts or more attempts. I think it's the case that they need a proper guidance at where they have to go, which companies they have to target, which person they have to go for referrals for getting the interview scheduled.
which material they have to follow, how they need to practice for the mock Yes, sir. interview. So this is the process. If they follow properly, it becomes easier for them to get into a job because there are so many Yeah, companies, yes, there are sir. which company to apply based on your attempts, which people to follow. We need to know that. Yes, I sir. feel Yes, sir. Yes, sir. otherwise Uh, it becomes difficult, especially off campus. It becomes very difficult. It yeah, becomes sir. very It's very difficult. difficult to get the job of campus, sir. I am. But we have made I sure know. that off campus, yes, I know many of my friends. Even they are having one or two attempts in CL right, final, but they are not getting job. The what was the difference between I and them was they are not having a proper strategy. They are not having a right, proper guidance. So guidance become very important to get you the job. right. I think right guidance helps. Because I think sometimes when you have less number of attempts, also even I had one or two attempts, although I didn't took mentorship, Yes, sir. but you tend to get a little relax. Okay, okay, I have a less mentorship. That also really makes a difference. I think so. Then when you have less attempts, Yeah, then yeah, you sir. have. I think especially if those who have multiple attempts, like 6, 7, 8 attempts, I think it benefits Yes, them in sense that they have revised the syllabus also many times and they have more yes, sir. patience. They have seen rejections. Yeah, They know how to deal with yes, sir. failures. Yes, sir. Even if they get Yeah. failed 1 or 2 times, they know okay, it's They okay. can Yeah, they can hold the nerves as well in their they can interview hold the because nerves. they have They can multiple hold. attempts. Yes, they can hold the nerve. Yeah, They are sir. patient. So that I think helps the Yes, multiple sir. attempts also. So there's Yes, always sir. a hope that people say that you have more attempts, you will not get a job, this and that. You cannot get it. I've seen multiple attempts, 3 years, and they've got job in Dubai in a very good place. I've seen people they've got into startups also with multiple attempts. They Yes, sir. have got into Yeah. startups also. So it is not that difficult that you can. I've seen them get into Big Four also. Multiple attempts, 6, 7 Yes, sir. attempts. It's not been Yeah. not Yeah. possible. So the Yes, thing sir. is that the sometimes our senior create that strategy mindset within us. If they did not get the job, they say, okay, okay, it's not easy. So it depends on whom we are listening to. If you're listening to somebody who's saying negative to you, then you also become Yeah. negative. I The feel same so. thing. Uh, The same thing happens with me as well. As I was having so many attempts, so many of my senior or my friends who cleared their yes. CA much earlier than me just told me that you are not gonna shortlisted by even a single company in campus Oh, placement. So there was as these things were going on into my mind when the campus placement was going on that whether I will be one of selected by my one student, shortlisted okay, by one C company has or I not. think 13 attempts. She has around 13 attempts. Yeah, She already got a job yeah, yeah, off yes, sir. campus. She's Yes, sir. always near to getting a good company around who is getting 12 lakhs. It's not finalized, so I'm not Yes, suggesting sir. the name. But around but 12, 13 Yes, sir. attempts she has. But still she is getting the job. Mm. So the people those who say that you have multiple attempts, you cannot get the job. I think the even the See, companies sir. nowadays they are just checking the skill set. If you have the skill set, communication skill, you're good to go. You have done Yes, sir. your prior work experience. And also one girl was there. She has I think 10 attempts. She is getting a work from Yeah. home job, which is not there in the Yes, and sir. 13 Yes, sir. lakh around 13 lakh around package and work Yeah. from home. And even nowadays, Yes, CA sir. firms also are paying good money compared to what we have seen in the Yes, sir. past. Okay. CA firms also now generally Yes, they are sir. not paying you like 20, 30,000. Nowadays, CA firms also, Yes, sir. if Yes, sir. you negotiate well with them, they are ready to pay you 50,000, 60,000 per month. So you Yeah, just yeah, have there is if you yeah, easily to the either. yes, yes. Yes, sir. If you just improve your knowledge, skill set, communication skill, strong on confidence, and Yeah. negotiate well with them. I think negotiation well Yes, with sir. them. Definitely jobs are there in the Yes, sir. market. And Yeah, sir. because yes, Yeah. mhm, yes, Yeah. Actually, sir, the attempts is a one criteria. There are so many things are also there, right. as that your communication skills. Are you able to speak in the interview? So your program was very good because it eliminate my fear of speaking. So I was adopted that situation when I'm going through the interview because I was already prepared for that. So if you And are in having PSU multiple current affairs attempts, also they check. In some PSU I saw they're yeah, checking current yeah, affairs there was a also. GT and there was Uh, GT and GD as well. So they selected the topic from current scenario. current scenario. So you need to know So you everything. must be having Retail the knowledge also. what's going around in Yes. India or around the world. They can ask you anything.
If you study very well, I always say, if you study very well, don't think about the result. Many people just think about the result. If you give one or two, three, four, five interviews and you are doing your homework, okay, the way you have done in your CA Yeah. final, even if you know, I Yes, sir. don't know, I one mistake I see, okay, many CA do, okay, will I get the job if I join my mentorship? Will I get the job by this doing? I say only one thing, okay, if you are doing really hard work in preparing for interviews very well, sooner or later you will get the Yeah. job. You never asked yourself this question, will I pass CA if I give this attempt? You never, you said na that I will give the CA exam irrespective I pass or Yes, fail. sir. वो जुनून रहता Yeah. है that spirit is there. क्या I have होता to है ना, give बच्चा exam. थोड़ा, हाँ, yeah, but yeah. What हाँ, happened after clearing CA? One will feel relaxed, so he don't रिलैक्स हो go जाता है. study. He think that अरे हो हाँ, जाएगा यार, ठीक है, देख अब लेंगे. एकदम So रिलैक्स तो these कर ही नहीं things was सकते. used to go into the यू mind. कैनॉट So we have रिलैक्स to आउट overcome हियर. these scenarios, situations. रिलैक्स नहीं कर सकते अगर आप Yes, sir. मेहनत करोगे. आई फील इफ यू डोंट Yeah, रिलैक्स, यू प्रिपेयर वेल, आप करते रहो. हाँ, रिजेक्ट हो yeah. सकता है. दैट कैन बी द केस, यू गेट Yes, रिजेक्टेड, sir. बट डोंट गेट बॉग डाउन एंड सी वेयर यू कैन गो अराउंड, गेट सम मेंटर. नॉट नेसेसरीली मी, पर किसी को भी आप गाइडेंस लो, बट मेक श्योर दैट आप अगर लगा रहेगा इसमें तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन नॉट गेट अ जॉब. पर आपको थोड़ा Yes, स्ट्रेटेजी में sir. तो Yes. चेंजेस लाना पड़ेगा. और जो इतना लोगों का जॉब लगाया जी, है, उनके पास आप जाओगे तो आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग का जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल काम है. सर. 365 डेज काम है. जी ऐसा सर. नहीं है कि भाई मतलब होता है ना, दिस वर डूइंग फॉर टाइम पास. तो दैट जी यू विल सर. जी गेट सर. बेटर थिंग. हाँ, आप अपना जैसे कोई पियर्स को पूछेंगे, मे बी उसका थोड़ा ओपिनियन बायस हो सकता है. होता है, उसको क्या पता, आप वो जी, जी. आपका भला चाहता है कि समटाइम्स यू फील दैट दिस पर्सन इज गुड, थिंकिंग गुड अबाउट अस, पर आपको पता नहीं क्या अंदर में क्या होगा उसका. तो दैट इज द थिंग. बट अभी हमारा है, अब यहाँ पर आया हो तो वी विल डेफिनेटली वांट यू टू डू वेरी वेल, ओके, एंड दिस इज आवर ब्रेड बटर Yeah. थिंग. तो आपको एक बेटर Yes, sir. Yes, sir. सर्विस मिल Absolutely. सकता है, जो आई ऑलवेज फील. एंड आवर फीस इज सो Absolutely, sir. नॉमिनल. Absolutely. दैट्स व्हाई आई फील कि Yeah. आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए. रिस्क तो है ही नहीं कुछ भी. क्योंकि Uh, आपको लग रहा है, फिर भी अगर एक और अगर होता है हम तो यू थोड़ा सा शुड. पैसा देके अगर हम साठ हाँ, मैं सत्तर वही अस्सी बोलना हजार चाह की रहा हूँ. जॉब ले रहे तो डजेंट मैटर दैट सर. मैं अपना जब सीए क्लियर किया था तो मैंने भी इस टाइम, मेरे को एक्चुअली मेंटर का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं था दैट टाइम. आई क्लियर तो हिट एंड ट्रायल. आई वाज लकी लिटिल कि आई हैड सम रिलेटिव सिस्टर्स, तो कि वी आर अग्रवाल, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा बिग फोर में मिल जाते इधर. तो थोड़ा नेटवर्किंग में आई वाज गुड, तो थोड़ा गाइडेंस मिलने के कारण आई वाज एबल टू डू इट. बट मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट दे नॉट कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे यस सर. फेस. अब आपका आपका फैमिली में या कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हैं? अब यहाँ पर मेंटरशिप बहुत नोबडी. जरूरत हो जाता है. आप पियर्स और फ्रेंड्स के, पियर्स अपना नौकरी लगाएगा कि आपका लगाएगा, उसके बाद कंपटीशन है. यू कांट दे. तो आपको एक ऐसा नेटवर्क नहीं मिलने के कारण भी, अब मेरा आई हैड द नेटवर्क, तो इट बिकम्स लिटिल इजियर फॉर मी. तो उसके कारण या था, पर स्टिल लेटर ऑन आई हैड टू अपस्किल माई सेल्फ. देयर वाज नो या ऑप्शन. आपको वहां से थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है, रेफरल मिल सकता है, कॉल आ सकता है, यस सर. बट इंटरव्यू तो खुद को ही क्रैक करना है, तो उसके लिए चाहिए नॉलेज. यस सर. यस तो सर. कैसे, और मॉक इंटरव्यू वगैरह, इवन इन तो माय फैमिली दैट्स. आल्सो देयर इज नो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय हाँ, नहीं रिलेटिव्स होता है. आल्सो. बहुत दिक्कत हो जाता है. दैट यू डोंट गेट द गाइडेंस ओनली, द प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग. मेरे यस को सर. भी काफी दिक्कत हुई. इवन आई हैड तो सो मेनी पीपल, बट क्या होता है कि या टाइम नहीं देता है. आई वाज फ्रॉम सिलीगुड़ी से, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई वेंट टू बैंगलोर, ओके. आई थॉट कि देयर वर सो मेनी या पीपल आई नो, बट आपको सही यस सर. समय, आपको एक खोजने में एक दो घर आपको दिक्कत हो जाएगा. आपको खुद को ही खोजना या पड़ता है सर. अल्टीमेटली, बहुत दिक्कत होता है. हाँ, तो हाँ वही सर, खुद चीजें को दैट कुछ टाइम. करना पड़ेगा. हाँ, खुद को ही करना पड़ेगा. था इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो दैट इज व्हाई आई थिंक अगर रोल ऑफ अ मेंटर प्लेज अ बिग रोल. और हम तो कितना लोगों को यस सर. होता है ना, एब्सोल्युटली. मुंबई में चल जाता है तो लोगों को पीजी वगैरह मिलने में दिक्कत होता है. इवन मेरा जान पहचान वो भी है, करवा देते होते हैं. लोगों को मिलने में दिक्कत, स्पेशली मुंबई जैसा प्लेस में जाता है. तो अभी एक जन का लगा प्रीजम जॉनसन, कोई का ईवाई, दे फेस डिफिकल्टी फाइंड इट आउट दिस. स्पेशली गर्ल्स, दे फेस डिफिकल्टी कहाँ पर रहेंगे. तो वो भी एक टेंशन रहता है ना. अब जी, आपका जी. कहीं पर जॉब लग जाता है, वो भी एक टेंशन बहुत बड़ा रहता है सीए को. हाँ सर, बहुत. रहेगी कहाँ पर मैं, घर से बाहर निकल रहे. तो इवन दैट मेरे को जान पहचान हो यस. गया, तो हम वहां पर भी करवाने का कोशिश कर देते हैं जितना हो सके अपना सोर्स जी, से. जी, जी. ठीक है, तो आदमी को यस छोटा सर. छोटा चीज को कहते हैं टेंशन रहता है सबसे पहले. एक्चुअली बहुत लोगों का ये रहता है जी. कि टेंशन की घर में काम कर लेते, बाहर में जाएंगे, कैसा कैसा लोग होगा, कंपनी कैसा होगा. तो पहले ही वो इंटरव्यू से पहले ही डर जाता है ये सब चीज को लेके, क्योंकि बहुत सारा चीज हाँ होता है सर. जो कि आदमी सोचता है जब जॉब में जाता है. स्पेशली गर्ल्स, आई थिंक दे थिंक अ लॉट. इवन पेरेंट्स आर वेरी, पेरेंट्स भी थोड़ा वो रहता है कि दे डोंट वांट देम चिल्ड्रन टू गो आउटसाइड देयर होम टू लर्न समथिंग न्यू, और चैलेंजेस लेने में डर लगता है. तो यहाँ पर मैं अब, क्योंकि मेरे पास इतना सीए जो आता है, तो कहीं ना कहीं बात करके तो डर हट जाता है.
कि हाँ हाँ सब जा सकते हैं जी बाहर। जब मैं भी सिलीगुड़ी से मुंबई या गया था, बैंगलोर गया था, हमको भी डर लगा था स्टार्टिंग में कि यहाँ कैसे जी जी रहेंगे, मतलब कभी घर से बाहर नहीं निकले। तो वो एक चीज होता है जो कि आपका मतलब यस सर मेंटरशिप में आपको पता चल जाता है, हाँ ये इधर काम कर रहा है, वो उधर काम कर रहा है। डिटेल्स। जी ग्रेट। आपको लास्ट कुछ किसी को अगर सीए फ्रेशर को बोलना है, लाइक एनी मिस्टेक दैट यू फेल दैट यू मेड, आई आस्क टू एवरीबॉडी दैट यू कैन टेल देम। ऐसा कोई मिस्टेक आपको लग रहा है कि जो कि आप भी किया हो, जो कि दूसरा को ना करना चाहिए स्टार्टिंग में जब बनते ही? यस सर yes हम्म, sir everyone after clearing CA final he should try to develop his interpersonal skill like communications. He should work on his communication skills. He should try to overcome his fear of speaking. Try to find someone, or you can he can take your mentorship. So there will be someone who will be able to guide him throughout his campus placement or throughout to get his job. He will be able to guide him to get कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी his job. इंपॉर्टेंट। फियर ऑफ Yeah. स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन Yes, स्किल, sir. ये आई फील दिस इज वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहता है What इंटरव्यू। happen हाँ। if you are having the if you are having a multiple attempts and your communication skills is good, so he can fill that gap. Communication skill हम्म, can fill your multiple attempts gap, so you can easily crack your interviews, whether it is a on campus or off campus. So it will help you to achieve a lot. What happens if you are not able to speak? The other person will not able to know that what is your knowledge, what do हाँ। you know. So one must speak. If you are having an interview, you should be able to speak. So communication play a very important role. So one should स्पीकिंग start प्रैक्टिस working on his करवाता ही है communication. रेगुलर। Yes, sir. स्पीकिंग You, प्रैक्टिस वगैरह में you हम, did all, you did a किसी को tremendous इंग्लिश job in एकदम नहीं improving आता my तब भी करवाते communication skills, हैं। sir. और Yeah, जिसका yes, sir. इंग्लिश एकदम Because खराब था उनको so बेस्ट many पे जॉब people लगा are है। मेरे को yes, कितना yes, आता है, sir. बिहार साइड से आता है, कोई जयपुर साइड से आता है, राजस्थान से आता है, यू डोंट नो इंग्लिश, एकदम बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होता Yes, है। बट sir. वी हैव डन, दे मोस्ट ऑफ देम दे गॉट इन बिग फोर, जेनपैक, ग्रैंड टोटन, गुड कंपनीज दे हैव गॉट इनटू। वही ये क्या बात है, होता है तो सर, हम आपसे हाँ। मेंटरशिप लेते हैं तो हम वो हम्म, उस सिचुएशन को हम पहले ही फेस कर चुके होते हैं। तो कभी हाँ कभी क्या होता है स्पीकिंग कि हम प्रैक्टिस, इंटरव्यू जा रहे हैं तो डर नहीं हमारी हार्ट लगता। बीट तेज हो जाती है, डर हो जाता है। तो वो क्या होता है कि हमको एक पहले से होता है, यार ये तो हम कर चुके हैं, अब क्या कर ही चुका डरना है, है इससे। अब डरना नहीं है, वही स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाता है ना। ठीक है। हाँ, वही स्पीकिंग चीज स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाती है। है। ठीक है। अगर हम दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल में ही क्लियर करेंगे। एचआर राउंड्स हैं, एचआर राउंड में वो मोस्टली एचआर क्या तो देखते हैं, सबसे यही चीज डेंजर देखते राउंड हैं कि है। तुम, हम्म, हाँ, तुम you are not getting nervous, whether you are able to hold your nerves. So these things they use to check. And if you are having your program, so we already know the situation, we already overcome our weakness, so it becomes a lot easy for us to इजी। go crack the HR round. खाली मटेरियल से पास नहीं हो सकता, भोजन के लिए मटेरियल Yeah, करता yeah. है, इट्स नॉट दैट But इजी। मटेरियल से आप नहीं सर, नहीं कर पाएगा, वो ना आपको बहुत कहीं ना कहीं गलती कर देगा। एक एक स्टूडेंट था हम लोग का, तो उसको पूछा था व्हाट आर योर 5 इयर्स प्लान। उसने डिलोइट यूएसए के एकदम लास्ट तक yes, चला गया था, व्हाट आर योर 5 इयर्स प्लान पूछा था। और उसने बोल दिया आई वांटेड टू जी, सीक इन एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग डिलोइट यूएसए। तो वहां पर मैं उसका yeah, उसको बोला विल गेट बैक टू यू। तो एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा काम खराब कर, जी और बहुत बिल्कुल, जगह हुआ है। पूरा मैंने एक इंटरव्यू जन को खराब कर देगा। पूरा इंटरव्यू, और मैंने एक जन को देखा था, उसका भी डिलाइट ऐसे का, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। उसने पूरा इंटरव्यू दे दिया, फिर जी, उसको इसको इंटरव्यू में एक चीज पूछा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज। वो बोला कि ओके, एक्चुअली आई गॉट सम मटेरियल फ्रॉम सम व्हाट्सएप ग्रुप एंड लिंक्डइन एंड आई कंप्लीटेड दैट नाइसली गलत हो गया। एंड आई स्पोक विथ यू। कॉमन सेंस लगाया नहीं। So an article what नहीं you have सर, done बिल्कुल in articles majorly I've done taxation, but you're giving so nicely या audit and answer and everything that I've learned from the या material। नहीं लिया उसको। वो है ना कि कॉमन आंसर सेंस, देने आने कॉमन चाहिए। सेंस इज वेरी कॉमन सेंस उस टाइम आपको पता नहीं चलता ना, क्योंकि आपको ये सब डील नहीं किया, क्योंकि वो लोग पूरा चेक करेगा आपको या 360 डिग्री। ऑब्जर्वेशन पूछ लेता है यस सर, अचानक से, तो ऑब्जर्वेशन के टाइम में आप mind बता नहीं stop पाएगा। working there when we feel हाँ nervous, तो mind stop working there, so आप अगर खाली पढ़ whatever लेगा comes into the क्वेश्चन mind आंसर, we speak. हाँ तो अगर आपको रटना में ठीक हो, यू आर गुड इन मेमोरी, तो आपने क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लिया, ठीक है। कुछ ना कुछ तो पूछ जी, लेगा वहां पर, मैं जहां पर मैं आप ट्रिक में फंस जाओगे हाँ, उसका। दे हाँ, आर वेरी, टेक्निकल ऐसा मारेंगे कि वो नहीं हो पाएगा, आप उसको बिकॉज वो फंसा रिक्रूटर को देंगे भी पता आपको। है कि आप कहीं से पढ़ के दे रहे हैं। रिक्रूटर ऑल्सो नोज कि जी, आप यहाँ पर में आए हैं, तो आप तो सीए है, तो आप ऐसे तो नहीं है बिना प्रिपरेशन का यहाँ पर आओगे। यू हैव डन योर होमवर्क, जी तो वो भी सर, अपना होमवर्क करके आता है। या, तो वो भी अपना होमवर्क जी करके सर, आता है कि हाँ ये तो सब जन एक ही आंसर दे रहा है। अब हमको कैसे पता चले कि इसको यस आता सर, है कि नहीं आता है काम। वो कुछ ना कुछ पूछ के आपका यस सर, चेक कर लेगा, आपको नहीं आता, एक दो सवाल पूछता है वो।
जिसमें वो चेक कर लेता है कि जी आपको ये जी आंसर कैसे पढ़ा है। आप वहां पर में आपने गड़बड़ कर दिया तो जी वो गया। They have made mistakes, so जी many जी वो mistakes I've seen. And I've seen, okay, like यस सर यस why you want to join this particular company only and this particular या location. ऐसे करके कुछ में घुमा के वो पूछ लेते तो दिक्कत हो जाता है। Okay, जी why जी you did not clear so many, मतलब why you took so many attempts to clear, तो वो आपको पूछेगा, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दे देगा, जहाँ पर मैं आपको पूछेगा जी what were जी challenges during your articleship, तो चैलेंजेस यस पूछ सर लेगा। तो ये सब चीज आप पढ़ नहीं सकता कहीं पर, आप मटेरियल से पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो आपका फिर वो नहीं चैलेंजेस सर में वो तो ग्रिल करेगा। प्रैक्टिस से ही पता होते फिर चलेगी सर ग्रिल वो करेगा वो चीजें चैलेंजेस में, फिर ग्रिल करेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर जी मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग गलती करता है जी खाली जी जी एज इट इज पढ़ने में गलती करता है। इट वाज ग्रेट एक्चुअली, यस सर ये आई थिंक ये कन्वर्सेशन काफी लोगों को हेल्प होगा wherever they are making बिल्कुल सर mistakes, and they will also get motivation that yeah, that is possible. And stay tuned to this channel, and thank you so much, Ravi, Rahul Kumar, it means a lot your feedback to us, and this will help us to थैंक grow यू सर better. थैंक यू सो मच इट Thank वाज you. माय प्लेजर सर